recently you must have seen in the newspapers that issue has been raked up in the state of Karnataka with respect to the children wearing hijab to the schools. So the debate is around that whether the uniform or whether the individual has a right that they can wear whatever they want and in consonance with their religion. So me, Anuj Sharma, will be discussing in this lecture today about right to religion and attire. So the basic understanding that why this issue is in news, ये issue news में क्यों है कि कुछ students जो कर्नाटका में थे कि they were basically wearing hijab to the schools. So the university premises and the college premises basically did not allow them to enter the school. तो वहां पे ये सवाल उठा कि यार क्या हिजाब डालना या क्या जो आपका right है of religion which is given by our Indian constitution that allows the individual to carry or to practice whatever they want. तो उसमें से एक आइडिया, the one idea out of that was that whether right to wear hijab is a constitutionally protected right. तो इसके ऊपर आज की हम क्लास में चर्चा करेंगे. तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, so the Constitution of India under Article 25 of the Indian Constitution talks about right to freedom of religion. So Article 25 to Article 28 of the Indian Constitution are related to the understanding of religion. उसमें से Article 25 is very very important because Article 25 of the Indian Constitution talks about the idea of religious freedom in the Constitution. Article 25 guarantees twofold fundamental rights. The first right under Article 25 is right to conscience, and second right under Article 25 is right to profess, practice and propagate the rights of their own choice. So what basically is the understanding of right to conscience? So when we talk about right to conscience basically is a right that an individual has कि वो जो चाहे, जिस belief को चाहे, उस belief को, उस practice को follow कर सकता है. Right to conscience is basically the individual's own right that whatever the individual wants कि जो वो चाहता है उस चीज को वो फॉलो कर पाए, that is basically right to conscience. कि मेरा कुछ बिलीफ सिस्टम है, आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है, मेरा कुछ फेथ है, आपका कुछ फेथ है, जो मर्जी फेथ हो, जो मर्जी बिलीफ सिस्टम हो, आप हर बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर पा रहे हो. आप अपनी मर्जी से अपने बिलीफ को, हम अपनी मर्जी से अपने बिलीफ को, अपने फेथ को फॉलो कर पा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज राइट टू कॉन्शियस. Right to conscience is related to the inner freedom of the individual. Right to conscience is related to the inner understanding of the individual. अब इस right to conscience में no one can guide an individual. कोई इंडिविजुअल को गाइड नहीं कर सकता, कोई इंडिविजुअल को बता नहीं सकता. ये इंडिविजुअल का अपने आप में एक ऐसा फंडामेंटल राइट है which basically gives an individual the right of inner freedom or the right of that whatever belief or faith they want to follow, they can follow that belief and faith. इसे राइट टू कॉन्शियंस के साथ अटैच है एक और फंडामेंटल राइट विद इन आर्टिकल 25, दैट इज राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ योर ओन चॉइस. सो व्हाटएवर यू आर बिलीविंग इन, व्हाटएवर फेथ दैट यू फॉलो, व्हाटएवर रिलीजन यू फॉलो, to follow that religion and to follow those practices, you also have the right to profess, practice and propagate the religion or the choice that you have made. So with respect to right to conscience comes, or with respect to your religion comes the right of 3 P's under Article 25 of the Indian Constitution, and the right of 3 P's under Article 25 of the Indian Constitution is right to profess, practice and propagate. Now, what do we understand by the idea of right to profess, right to practice, and right to propagate? So, when we talk about the idea of right to profess, तो right to profess का मतलब होता है that you have the right to spell out the religious beliefs or the religious ideas that you have. तो बेसिकली आप जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या नहीं बात कर रहे हो, you have the basic right to spell your beliefs. ठीक है, कि जिस चीज में आप मानते हो, जिस चीज में कोई भी मानता है, आप उस राइट को या उस बिलीफ सिस्टम को स्पेल कर सकते हो, बात कर सकते हो, किसी को बता सकते हो. आपका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, आपका बेसिक सब अंडरस्टैंडिंग है दैट यू आर जस्ट टेलिंग अबाउट योर रिलीजन, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर रिलीजन और टॉकिंग अबाउट योर फेथ और टॉकिंग अबाउट योर बिलीफ. राइट टू प्रोसेस होता, राइट टू प्रोफेस होता है बेसिकली अपने रिलीजन की बात रखना, अपनी बात रखना, अपने बिलीफ सिस्टम को बताना. उसी के साथ आइडिया है दूसरा राइट टू प्रैक्टिस. नाउ राइट टू प्रैक्टिस बेसिकली इज रिलेटेड टू द सिंबल्स, द कस्टम्स, द सिंबल्स, द कस्टम्स एंड द कल्चर ऑफ द रिलीजन. कि हर रिलीजन का कोई स्पेसिफिक सिंबल है, हर रिलीजन का कोई स्पेसिफिक कस्टम है. उस सिंबल, उस कस्टम को फॉलो करना
उसका फ्रीडम भी हर इंडिविजुअल को मिलता है। जैसे कि वो हिजाब की बात जिस वजह से आइडिया न्यूज में है, वो इसी बेसिस के ऊपर है कि क्या हिजाब डालना या राइट टू वेयर हिजाब इज अ पार्ट ऑफ द कस्टम और द प्रैक्टिस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। Basically, because some ideas or some identities are very much related to the understanding of the religious practice. For example, Sikhs wearing turban is a custom, is a practice. The Muslim men wearing skull cap is a religion, is a practice, or is a symbol of a religion. Hindus wearing tilak is a symbol or a practice of a religion. Women in Islam wearing hijab is a symbol or a practice of religion. तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएटेड हैं कि ऐसी कोई चीज जो बताए कि आपका रिलीजन क्या है, उसके साथ बेसिक कुछ सिंबल्स, कुछ बेसिक कस्टम्स अटैच हैं। दैट इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट टू प्रैक्टिस। Right. So right to practice is another fundamental right, another idea that is included in Article 25. And the third idea is right to propagate. Now, when we talk about right to propagate, the right to propagate is basically that when you try to spread your religion or try to influence others from your religion or on the basis of your religion, that you are trying to influence others on the basis of your religion. आप अब पहले प्रोफेस में सिर्फ धर्म बता रहे हो, प्रैक्टिस में आप उसको प्रैक्टिस करना सिखा रहे हो कि सिंबल्स क्या है, कल्चर क्या है। और जो प्रोपोगेट है, प्रोपोगेट में आप अपने धर्म को फैला रहे हो, अपने आइडियाज को फैला रहे हो। अब कोई माने कोई ना माने उसकी मर्जी है, राइट। कोई आपके आइडियाज को, कोई आपके कल्चर को, कोई आपके सिंबल्स को माने ना माने वो उसकी मर्जी है, बट यू हैव द राइट दैट यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स और यू कैन प्रोपोगेट योर फंडामेंटल राइट, that you can influence or you can propagate your ideas or your belief systems, कि आप बाकियों को बता सकते हो, कोई influence हो ना हो। So right to propagate basically includes that you can tell others or you can spell your rights openly and freely and influence others by your belief system or by your religion. But right to propagate does not include right to convert others. Right to propagate does not include right to convert others, because in India what is banned is forceful conversions. What is banned is forceful conversions is banned, right? Because if I am forcing other individual to convert into my belief system, to convert into my religion, I am violating the individual's right to conscience. An individual has a right to conscience कि वो जो चाहे उसे फॉलो कर सकता है, पर अगर मैं अपना धर्म, अपना राइट यूज करते हुए उसका राइट वायलेट कर रहा हूं, दैट कैन नॉट बी अलाउड। सो दिस बेसिकली ब्रिंग्स अस टू द आइडिया दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25 is not a absolute fundamental right, and there can be certain restrictions with respect to this fundamental right. And the restrictions with respect to the fundamental right is that the state can restrict the right on the grounds of public order, decency, morality, health and other interests, right? तो इन बेसिस के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। इसी राइट को आर्टिकल 25 को ही एलेबोरेट करते हुए 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात करी थी डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। नाउ दैट जजमेंट वाज बेसिकली रिलेटेड द शिरूर मठ केस इन 1954 व्हिच वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Now in that judgment the Supreme Court talked about the doctrine of essential religious practices. Now, what do we understand by the doctrine of essential religious practices? Now, the essential practices of a religion are those practices, if they are taken away, the essence of the religion can get disturbed, the understanding of the religion can get disturbed. That means if those practices, those ideas are taken away, then the religion can be discriminated against. कि हर religion में कुछ basic important practices होती हैं, हर religion में कुछ important practices होती हैं जो उस religion का essence होती है। तो अगर हम वही practices religion से ले लेंगे तो religion में डाइल्यूशन होगा और रिलीजन वो सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल इन हिंदुइज्म आइडल वर्शिप इज अ एसेंशियल प्रैक्टिस बिकॉज द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म इज आइडल वर्शिप। So if you take away idol worship from Hinduism, then the idea of the religion can get impacted. So similarly, every religion has some essential practices which are very, very essential for the understanding of that particular religion and for following that particular religion. इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट्स दी हुई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द सुप्रीम कोर्ट हैज specifically said that the understanding of dancing on skulls, right, the Tandav Nritya is not the part of essential practice of Hinduism. So the Supreme Court has stated that it is not the essential practice. So if you take away, the religion may not get impacted.
If you take that away, the religion may not get impacted. Why religion may not get impacted? Because it is not the essential practice. कि उसके बिना भी धर्म वैसा ही था, उसके साथ भी धर्म वैसा ही रहेगा. धर्म में कोई इंपॉर्टेंट चेंज नहीं आ रहा है उस रिलीजियस प्रैक्टिस के बेसिस के ऊपर. Similarly, triple talaq, instantaneous triple talaq, Shiara Bano case 2017, instantaneous triple talaq, talaq-e-biddat. So the proponents of talaq-e-biddat, of the instantaneous triple talaq, they stated that it is a part of Article 25 right to practice. The Supreme Court said no. Supreme Court said that the talaq-e-biddat or instantaneous triple talaq, if it is taken away, then the religion will not get impacted because it is not the part of essential practice of the religion. So the Supreme Court has declared that there are some ideas or some understandings in every religion which are very, very essential for the religion, and if they are taken away, if the essential practices are taken away, then the religion may get impacted. So the essential practices of any religion are those practices that if they are taken away, then the religion may get impacted, or the religion may get impacted. That is what is the understanding of essential practices. So there are some understandings that the religion or the practices may not be taken away so that the religion is not directly impacted. तो अभी जो सवाल उठा है वो यही है कि क्या हिजाब, that the women of Islam, those are wearing hijab, so is wearing hijab a right to practice or comes under right to practice, and is it essential to the religion? So ये सवाल उठा है, राइट. और इसके अलावा भी कई सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं हिजाब को लेके या हिजाब को लेके, दैट वेदर द वुमेन ऑफ इस्लाम और द स्टूडेंट्स कैन वेयर हिजाब और नॉट. तो सबसे पहले तो केरला हाई कोर्ट की 2015 की जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला था दैट the girls can dress as per their own comfort, but they did not still take away the guidelines of the CBSE. The second was Fatima Tehseen versus the state of Kerala, that the collective rights of an institution were given primacy over the individual rights of the petitioner. Collective rights of the institution are basically under Article 26 of the Indian Constitution, कि जो collective rights and they were given primacy over the rights of the individual, right? That the individual cannot seek those rights which are basically against the rights of the collective unit. So this matter, that whether it can be allowed or not, it cannot be allowed as per the present circumstance, is still under discussion, is still under contention. So our basic idea was to tell you that what basically is Article 25 of the Indian Constitution and whether it comes under Article 25's right to practice or not. To know more, you can go in the description and purchase our courses and watch the demo lectures and also the test series. So I hope to see you next time. Until then, thank you, take care and be safe.